Just a second. So distance formula already we have covered. Okay, all the possible question which was tricky, which was confusing, we have discussed over here. Now we'll be taking the section formula. Yes, Fezan, you have already learned the concept. You said you are already aware with the concepts. Can you tell me what exactly is section formula? Section formula is root m2x1 minus m1x2 and divide by m plus n. Yeah. Basically, when we are having a line segment joining 2 points, let's say A and B, if the coordinate of A is x1, y1, and if the coordinate of B is x2, y2, if there is a point P somewhere which is dividing this line segment AB in ratio m1 is to m2, okay, then we can find the coordinate of P by using of ready-made formula which we are having, and that is the coordinate of P will be, yes, Afnan. Okay, not Afnan. Who is there? Alvina, you are there, right? Yes, ma'am. Okay. Coordinate of a point P will be this. P's coordinate will be m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. This is x coordinate, and y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Okay, so this is how we can find the coordinate of P. Again, listen to me. If we are having a line segment AB, where we know the coordinate of A and B, and if there is a point P line somewhere, okay, I'm not saying in the middle, anywhere in between, okay, then P's coordinate we can find. But we must know the ratio in which this P is dividing AB. Okay, m1 is to m2 is the ratio. Then we can, with the help of the ratio and the coordinate which we are having in hand, we can find the coordinate of P, that is m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, and m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Now from here only the midpoint formula also came from here only. So अगर ये P जो है exactly mid point होगा, exactly mid point होगा AB का, तो हमें पता है मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये जो रेशियो होगा 1:1 होगा, यस और नो? Yes. Okay, whenever we are saying midpoint, that means the length AP and the length BP will be same. And when you will try finding the ratio, of course you will be getting 1:1. Okay, तो जब ये mid P जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट निकालने का एक अलग फॉर्मूला है, जो कि ऊपर जो हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला से हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला मिला है। ओके, क्योंकि मिड पॉइंट के केस में हमें समझ में आ रहा है कि रेशियो क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा। ओके, सो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, x1 x2, वेट, x1 y1 x2 y2, and the midpoint formula is x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2। ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमें सेक्शन फॉर्मूला से ही मिला है। यहाँ m1 के प्लेस पे हमने 1 पुट किया है, m2 के प्लेस पे हमने 1 पुट किया, तब जाके हमें ये फॉर्मूला मिला है। डेनोमिनेटर में 1+1 ऐड होके 2 क्रिएट कर रहा है। ओके, इफ यू अंडरस्टूड दिस टू फॉर्मूलाज properly, then I am giving you few question, please do it.
Just a second. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points and yeah, the formula which we discussed, this formula is for finding the coordinate of a point P which is dividing the line internally. ओके ये जो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा है, ये एक ऐसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं जो कि लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है. इंटरनली का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट पी है लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में कहीं, ओके इन बिटवीन कहीं पे भी लाई कर रहा है. ओके ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट पी है ए बी के बियॉन्ड या फिर पॉइंट ए के बियॉन्ड लेफ्ट साइड में या फिर पॉइंट बी के बियॉन्ड राइट साइड में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है. नो. ओके सोच के देखो, ऐसा भी केसेस हो सकता है कि अगर हमारे पास एक लाइन ए बी है तो इसे एक्सटेंड करने पे कहीं एक पॉइंट पी है जो कि इसे इस ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मतलब एपी इज टू बीपी रेशियो क्रिएट हो रहा है यहाँ से. तो इस केस में यहाँ कहते हैं कि ये जो पॉइंट पी है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. ऑफ कोर्स एपी विल बी बिगर देन बीपी. ओके द नंबर विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एपी दैट विल बी बिगर देन बीपी, बट रेशियो तो तब भी फाइंड कर सकते हैं. ओके ये वाले केसेस फ्यूचर में यू विल बी एबल टू सी. But for now, you just have to focus on you are having a line segment joining two point AB where you know A, where you know B, and P is lying somewhere, somewhere in between. Maybe here, or maybe here, or maybe here, somewhere in between. Okay? Lying internally. That's why each and every question में अगर ये internally terminology हो तो confuse नहीं होना, क्योंकि हमारे syllabus में internally वाला portion ही है. Got it? Okay. Yes, ma'am. Find the coordinate of a point P. See the data given over here.
Yes, what are you getting? The coordinate of a point P, 7,3. Yes, Fizan got 7,3. Ayan and Alvina. Yes. Are you able to do, Alvina? Yes, ma'am. Please tell me what exactly are you getting? Ma'am, 7,3. 7,3, right? Let's do the next question. In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the point A, that is -6,10, and B, that is 3, -8. Here we have to find the ratio. In what ratio does the point this -4,6? So P is given over here. See, P का coordinate हमें already given है यहाँ पे A and B line segment. Okay, this 2 coordinate is also known. P is given, P is just sitting somewhere, -4,6. और इस बार हमें क्या find करना है? M1 is to M2. By using the same formula, yes, by using the same formula, हम कह सकते हैं कि हमें P का कोऑर्डिनेट पता है, that is -4,6, एंड अगर ये M1 is to M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं M1x2 that means 3M1 plus M2x1 that means -6M2 by M1 plus M2. Okay, comma M1 y2, that was -8. Yeah, that was -8 plus M2, this 10M2 by M1 plus M2. Okay, and this is how, this is what we are getting. We can compare, हम ये जो दोनों जो कोऑर्डिनेट है इसे कंपेयर कर सकते हैं मैथमेटिकली. क्या ये अलाउड है? यस, ये अलाउड है. ओके यहाँ पे कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं जो एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड में है और एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड में है, ये दोनों आपस में इक्वल होना ही चाहिए. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रीवियस क्लास में तुमने सीखा होगा दैट अगर a, 2 is equals to 8, y, then we can do the comparison. We can say that a value is 8 and 2 is equals to 5. ओके ये अलाउड है. अगर दो कोऑर्डिनेट के बीच में इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड में इक्वल होंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड में वाई कोऑर्डिनेट राइट साइड में इक्वल होंगे आपस में. तो अगर हमें ये समझ में आता है तो हम अब कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें P गिवन है इस क्वेश्चन में. हम कह सकते हैं दैट -4 इज इक्वल्स टू 3M1 -6M2 बाई M1 प्लस M2. और ऐसे ही दूसरे वाले y कोऑर्डिनेट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है. किसी एक को ही कंपेयर करने से हमें हमारा आंसर, हमारा रेशियो डायरेक्टली मिल जाएगा. Okay, this M1 plus M2 we will be shifting to another side. It will be -4 M1 plus M2 is equals to 3M1 -6 M2. Okay, we'll be getting -4 M1 -4 M2 is equals to 3 M1 -6 M2. अब हम कोशिश करेंगे, we will try to keep M1 on one side of equal to and M2 on another side of equal to. So 3 M1 we are having over here, -4 M1 we are having over here. M1 वाले टर्म को, लाइक टर्म को एक तरफ रखेंगे हम, तो we can write -4M1 -3M1, या फिर ये 4M1 को उस साइड में भी ट्रांसफर हम कर सकते थे.
ओके, यहाँ जो -4m2 है, this will be taking to that side, so -6m2 plus 4m2 हमारा कुछ ऐसा दिखेगा. Okay, listen to me carefully. I am telling you that you should keep m1 on one side and m2 on the other side. This way, directly you will be able to get the ratio. -4 -3 -7m1 is equals to -2m2. और यहां से हमें डायरेक्टली देखो ध्यान से रेशियो मिल रहा है m1 by m2. यहाँ m2 को डेनोमिनेटर में ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, -2 को एज इट इज रहने देते हैं. ओके, एंड जो -7 है लेफ्ट साइड में, उसे अगर दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डेनोमिनेटर में जाएगा. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट आयान, फजान Yes. एंड अलवीना, कि कैसे हम डायरेक्टली रेशियो फाइंड कर रहे हैं. हम ऐसा वाला इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं दैट इज -7m1 plus 2m2 is equals to 0. नो. ओके, यहां से ही हम रेशियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो हम ये कह सकते हैं दैट -7m1 by m2 is equals to -2. Okay, m1 by m2 is equals to -2 by 7. -7, can we say that minus minus gone, 2 by 7 is the final ratio? Are you getting it, Alvina? Yes, ma'am. ओके, तो ऐसे हम डायरेक्टली रेशियो फॉर्म करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस में. ओके, आई एम राइटिंग वन मोर एग्जांपल, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो. अगर हमारा एग्जांपल कुछ ऐसा दिख रहा है दैट इज 3x इज इक्वल्स टू y, कैन यू टेल मी x बाय y क्या होगा? हु विल से? अगर 3x इज इक्वल्स टू y है तो x बाय y क्या होगा? डायरेक्टली यहां से क्या हमें x बाय y मिल सकता है? 3. यस. It will be 3. 1:3. Yes. No, 3:1. 3:1 or 1:3? 3:1. ध्यान से देखो, it will be 1:3. Here 1 is multiplied with y. That's what we are thinking. Okay, y is in multiplication. It will come in division. What will remain? 1. 3 is already there. So can we say it will be 1:3, not 3:1? Okay. Whenever you will encounter such scenario, please don't write 3x minus y is equals to 0. हम ऐसे सोचेंगे कि y के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, y को चलो डेनोमिनेटर में लेके चलते हैं और 1 को छोड़ देते हैं वहीं पे. ओके, तो 3x बाई वाई हो गया. बट हमें ये जो 3 मल्टीप्लाइड है ना लेफ्ट साइड में, ये नहीं चाहिए, तो इसे ट्रांसफर करते हैं. तो क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये दूसरे साइड में जाके डिवीजन में होगा, राइट? गेटिंग इट? If I am giving Yes. you one more example, that m is equals to 5n, m is to n will be what? 5:1. It Yes, will be 5. yeah, it will be 5. We can call it 5:1 as well. Okay, या सो ऐसे हमें रेशियो क्रिएट करना है, इक्वेशन नहीं क्रिएट करना है डायरेक्टली, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए. ओके, और अगर एक
x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके ही हमें रेशियो मिल रहा है, दैट्स ग्रेट. Now if you want to ask me that what if we will compare the y coordinate instead of x, so let me tell you, you will be getting the same answer. Instead of x, if you will compare the y coordinate over here 6 with this one, you are going to get the same answer. Okay, now let's move. I'm giving you one question where you are supposed to find the ratio. Please tell me what exactly you are getting it. Yeah, please find the ratio.
What are you getting? Yes. Got 2 ratio 7. Okay. 2:7 you are getting. Yes. Yes, Alvina, are you getting the same? Ayan, are you getting the same? Yes, ma'am. Same. Okay. Then these are the straightforward question. Okay. Where you have to just focus on doing the simplification, calculation properly. If you will be able to use the formula properly, calculation properly, you will be getting the answer. Now the next type of question is, yeah, this is also very important question, which you will find in previous year question paper as well. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is read this question and tell me, are you understanding what exactly this question is talking about? Read it carefully and tell me. Yes, do let me know what exactly you are getting from here. One hint I can add over here that yeah, you need to apply midpoint formula over here. Yeah. Yes, what to do over here? I have to find the coordinate of point A. Yeah. We have to find the coordinate of a point A, where AB is the diameter of the circle. We know B is 1, 4. We know the center's coordinate is 2, -3. So Like there center is a circle midpoint. with a center 2 and -3, and like AB is the diameter of the circle with B 1 4. So first we'll do is like let x and let x y the ratios, and then like in the coordinate A, like, and then the center, then we have to solve it. That's it. Yeah, exactly. Center is nothing but just the midpoint of this line segment AB. See, अगर हमारे पास एक diameter है तो center तो midpoint ही होगा. Okay, उस diameter का. Of course होगा. हमें पता है, right? Right? Center is the midpoint of the diameter. Do you know that? Yes. Okay, Yes, if ma'am. I'm saying that PQ is the diameter and O is the center, of course we know that OP and OQ will be same because O is the center. Okay, so if we know that, then we can use midpoint formula. Okay, we can use midpoint formula. We can say that coordinate of O, coordinate of midpoint O, that is
Even if it is given, we can compare it with the midpoint formula, that is x1 plus x2 by 2. That means x plus 1 by 2, comma y plus 4 by 2. And you know, when two coordinates are same like this, how to compare it, right? Right? What will be the answer? What will be x value and y value? Please find x and y value. Meanwhile, 1 I am minute. writing the question. Now this question, find the ratio in which the line segment joining A, that is 1 comma minus 5, and B, that is minus 4 comma 5, is divided by, The answer will be 3 and minus 10. yeah, find the ratio in which line segment joining AB is divided by x-axis. Okay, अब ये भी क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला वाला ही क्वेश्चन है, that we are having a line segment joining AB where we know the coordinate of a point A, where we know the coordinate of a point B. Okay, find the ratio in which it is divided. So कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, m1 is to m2, ये हमें फाइंड करना है. By x axis, ओके, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. ये क्या डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है. ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, मतलब जो हमने फिगर ड्रॉ किया है ये रॉन्ग है. ओके, हमारा जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है. कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही हमें फाइंड करना है. तो एक्स एक्सिस तो हमारा कुछ ऐसा दिखता है, एंड वाई एक्सिस हमारा कुछ ऐसा दिखता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस ऐसा दिखता है, वाई एक्सिस ऐसा दिखता है. दो पॉइंट्स है हमारे पास ए एंड बी. ओके, हो सकता है ये दोनों पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हो तभी इसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर पा रहा है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है हमारे लाइन सेगमेंट एबी को. हमें बताना है कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा. m1 is to m2 हमें यहाँ भी फाइंड करना है. तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है P, एंड दैट इज डिवाइडिंग आवर लाइन. एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब हमारा पॉइंट P जो है सेक्शन फॉर्मूला वाला, वो इस बार एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और वो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है. जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है या फिर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हमारा जो पॉइंट P है सेक्शन फॉर्मूला में, वो इस बार एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. तो अगर हमें अज्यूम करना है P का कोऑर्डिनेट, who will say what can be taken as a assumption? K A comma, one can you please repeat?
K, comma Okay, k comma 1 you are saying. But rather than, yeah, you can take k comma 1 as well. Okay. But instead of taking k comma 1, see, let's take k comma 1 and let's check it. That are we getting the ratio? See, the ratio m1 is to m2 can also be written as m1 by m2 is to 1. That means k is to 1. Okay. k comma 1 y we are taking. सी ये तो रेशियो ऐसे लेते हैं, बट कोऑर्डिनेट तो खुद से 1 नहीं बोल सकते ना अयान, बोल सकते हैं? नो, ma'am, I meant to say K is to k इज टू 1 रेशियो को ऐसे बोल सकते हैं. ओके, कोऑर्डिनेट को तो k कॉमा 1 नहीं बोल सकते. अगर कोई कोऑर्डिनेट k कॉमा 1 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है. ओके, सिंस वी हैव टेकन, लाइक, लेट मी क्लैरिफाई दिस पार्ट. अगर कोई कोऑर्डिनेट ऐसा दिखता है, मतलब कि एक्स एक्सिस से k डिस्टेंस है, जो भी ओके, एंड y एक्सिस से 1 है, इसका मतलब ये होता है. तो कोऑर्डिनेट जब हम अज्यूम करेंगे तो ध्यान से करेंगे. ओके, सो k इज टू 1 यू वांट टू टेक, बट ये जो पॉइंट p है, हमें रेशियो फाइंड करना है. मतलब अगर हम k का वैल्यू फाइंड कर पाए तो हम कह सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली विल बी द रेशियो, बट हमें यहाँ पे p भी नहीं पता है. क्या ऐसा पॉसिबल है दैट एक लाइन सेगमेंट ए बी है जहां a वी नो एंड b वी नो, p वी डोंट नो. ओके, एंड k इज टू 1, k ऑल्सो वी डोंट नो. तो जब दो दो चीजें नहीं पता है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट? लेट्स यूज द फॉर्मूला एंड लेट्स चेक इट कि क्या यहाँ से ये पॉसिबल भी है कि अगर हमें p भी नहीं पता, रेशियो भी नहीं पता, तो रेशियो फाइंड कर लेना पॉसिबल है क्या? चलो देख लेते हैं. ओके, -4,5 एंड 1, -5. ओके, m1 like k into x2, k into x2. See, Alvina, this you can use this ratio as well and you can use m1 is to m2 as well. जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वही रेशियो यूज करना है. k is to 1 भी हम यूज करते हैं. क्यों ऐसे यूज करते हैं? क्योंकि हमारा जो m1 is to m2 है, उसे हम ऐसे इस वे में भी कंसिडर कर सकते हैं. m1 by m2 is to 1. दैट मीन्स m1 by m2 को चलो k बोल लेते हैं, k is to 1. जैसे ही हमें k का वैल्यू मिलेगा 3/4, 4/5, वहां से हम प्रॉपर m1 is to m2 वाला फॉर्मेट फिर से जनरेट करके फाइनल आंसर लिखेंगे. राइट? Yes. ओके, सो m1 like k -4 plus 1 into my 1 over k plus 1. See, this you are getting in terms of k, and the other side also the coordinate you don't know. So from here you won't be able to find the ratio. Let me tell you how exactly you will be able to find it. If the point P is lying on x-axis, try to understand that on x-axis the coordinates on x-axis looks like whatever be the coordinate of x, y is 0. Okay, x-axis के ऊपर कोई भी ऐसा point है जहां पे अगर हम कोऑर्डिनेट सोचने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, तो x का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, x के प्लेस पे कोई भी नंबर होगा, बट y तो 0 ही होगा.